उसने मतलब वो जोर जोर से बस अपने दिमाग में सोच रहा था कि इस कैंडेलेब्रा का मुझे करना क्या चाहिए. Now the thing is, the wig maker was yes, no, it is almost half of time. If they were late for 15 minutes or so, I can get them in. Not 30 minutes after the class is already started. Already. The thing was the wig maker, जो आर्टिस्ट के विग मेकर थे, कॉमेडियन के विग मेकर थे, उन्होंने बताया कि न्यू अबाउट द स्मिर्नॉफ शॉप. उस शॉप साशा's mother shop. जो साशा था उसकी माँ अभी चला रही थी because his father passed away. So his mother and himself they were involved in the business and they know about the Smirnoff's business. The big maker know about the Smirnoff's business. So they suggested that the actor should go there and actually sell the candelabra to them. Now the thing is that the I've already told you there were a twin arc. That means एक के साथ एक दो set of candelabra थे. There was a pair. Now the thing was, Sasha was very much regretting in the starting that he cannot give both the pair or both the candelabra to the doctor. Now the candelabra that was sold to the Smirnoff's shop, both the mother and the son thought that it was the second pair that came back to them so that they can gift it back to the doctor. They thought it was a coincidence of fate that they received the candelabra again. उन दोनों को लग रहा था, स्मिर्नॉफ मदर जो थी मिसेस स्मिर्नॉफ और जो उनका बेटा था शाशा, दोनों को ऐसा लगा कि ये किस्मत ही है कि हमारे पास वापस आ गया है इसका दूसरा जोड़ी. अब हम दोनों कैंडेलेब्रा जो है वो डॉक्टर को गिफ्ट कर सकते हैं एंड ही कैन यूज इट लाइक अ सेंटर पीस ऑफ अ टेबल. टेबल पे वो बहुत ही खूबसूरत सेंटर पीस लगेगा. दो साइड में पहले बड़े डाइनिंग टेबल हुआ करते थे, तो एक साइड में इधर एक साइड में इधर वो रख सकते हैं एंड इट विल लुक ब्यूटीफुल ऑन देयर डाइनिंग टेबल. द थिंग इज the same candelabra that he gave to the doctor had returned and only doctor knew about this. Sasha was very happy to return to the doctor's office and give him the candelabra, thinking that it was the second pair, not the first one that was given to the doctor. साशा बहुत ही खुश था जब उसके पास वो सेकंड पेयर आया, जो उसे लग रहा था कि सेकंड पेयर है, और वो बहुत खुशी होकर कैशल पॉल के ऑफिस में गया और अब कहा उसे कि सर देखिए मुझे दूसरा वाला पेयर मिल गया. नाउ you can utilize both the candelabras and it will look beautiful anywhere you put them. Now the doctor did not say anything. He was forced just to smile because Sasha was very happy. He cannot say in front of Sasha that I don't want the gift. He has already tried to convince Sasha that it would not look good on the doctor's office, but still he at that time he cannot utter a single word and he only thought the currently his thoughts were gone blank. उसके दिमाग से कोई भी थॉट्स निकल गए थे, वो क्या बोल रहा है क्या बोलना चाहता है उसे कुछ नहीं याद आया, बस साशा उसे देके चला गया and he was left speechless. Now the thing is, the questions that might be asked from this have already been given to you. Is there any doubt regarding the questions that I have given you? जो क्वेश्चन मैंने दिए थे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछने लगूंगी. इट्स बेटर दैट यू आस्क एनी डाउट.
Do you have any questions? No. All right. Who can describe me the cantilever? Can anyone describe the cantilever? Surprise test का marks जानना। बताइएगा नहीं तो ये बताइए कि अच्छा है कैसा। हाँ वो अच्छा आपके लिए है या नहीं है? How would I decide? Copy दे देंगे। Okay, what is your last class? What timing do you have your last class? Last class कब है तुम्हारा? 1 बजे 1 से 2 last class 12 से 1 last class 12 से 1 last class है तो 1 o'clock my class is here in the next classroom. I'll bring it. You wait here, take it. Copy देने का कोई प्रावधान नहीं है. बस नंबर बता दीजिए. नंबर बता. It is up to you if you want to know because you know the roll number of your classmates, no? बस हम अपना जाता है. अच्छा, how many students of purple code? Did you give the test? All of you? Yes, one more thing. If you're going to take the numbers, I want you to improvise the number, not just listen to the numbers that you have gotten. Okay? Improvise your numbers that I have given. Okay. 4442. Aparna was there, right? Okay. 55, roll number 55 is present. 61 is present. 37 and 70. Okay, 70 for 1 and 37 is 0. Anybody else from All right, 445 students. How many are there? We asked for it, so I will have to tell. Acha, how many of you are present? Who gave the test? Okay, 11 is present. 2 is present. 13. 1. 60. 1. 25. 1. 10. 11.
Just because you are not making mistakes in the section doesn't mean you got one, actually more than one, but since you were caught cheating, you were deducted. हाँ तो दोनों का कटेगा बच्चे, जो करेगा चीटिंग और जो करवाएगा चीटिंग, दोनों का नंबर कटा। तुमको तुमने जिसको दिखाया उसका तो 0 हो गया कटने के बाद नंबर। पहले बोल दी थी मैंने बोल दिया। I have already told it from the class, starting of the class, that whoever is caught cheating or if the answers are 90% same, you will demand. Like only 55, roll number 55 got actual passing marks. She got 6 marks. 6. You can take the paper and ask me where you want the number. If you want, you can go ahead and ask the question once. All right. Yes, who can describe the candelabra? Who can describe the candelabra? A work of art is totally based on this single object, and you don't even know how the description of the candelabra is. Do you know the answer? Any one of you? Write down the question, and I want this answer in the next class. All of you will write down. Next class, you will get the answer. I don't know how, but you will get the answer. Write down the question. Describe the candelabra. Describe the candelabra. Describe the candelabra from the chapter A Work of Art. From the chapter A Work of Art. All these questions that I am dictating you, these are important questions. You should know the answer of these questions. At least this much that you can write it for one paragraph or at least 2-3 lines. You should be able to write down. Okay. Yes, 3 important questions. Why did the doctor did not want the candelabra in the office or at home? Why did the lawyer did not want the candelabra at his home or office? Why did the actor did not want the candelabra? तीनों ने कैंडेलेब्रा पास ऑन करने की कोशिश की, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए. पास ऑन किया है, ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए. Who passed on to whom? The candelabra was passed on to whom? ये सीक्वेंस आपको जानना है. You should know the sequence from where the candelabra started to shuffle and for what reason it started to shuffle. हर किसी का अलग अलग रीजन था. For the doctor it was different reason, for the lawyer it was different reason, and for the actor it was different reason. You need to learn the different reasons why all these 3 actually passed on the candelabra and how it got. See, the most important and the longest question that can come is, when Sasha gave the candelabra to the doctor, how come the candelabra get to the Smirnoff's business store again? इसमें आपको पूरा स्टोरी बताना पड़ेगा. So it is the longest question that can come. Okay, you can write that down and write the answer, or at least read the answer, read the passage. You will get the answer very easily. Okay. Now the next chapter was definition of the gentleman. How many questions are? If I had, I would have told you. I had no idea. If I get any information, I will let you know anything about the internal examination or the external examination. But till now, you are much more informed than I. Students are telling me that the registration has started. So,
A definition of gentleman. If you have any doubt regarding this chapter, you can ask me. Again, there are three major important points in this chapter that you will get for the question. Do you have any idea? Can anyone summarize this? The definition of gentleman? Can you summarize this chapter? नेक्स्ट क्लास बच्चे आपका नेक्स्ट क्लास कभी नहीं आता है, ठीक है? आप ध्यान दे दियो, जब क्लास खत्म होने वाला है, बंद होने वाला है. No next class. Listen to it carefully. The three important questions from this chapter. आप बोले सेंड करने कोई सेंड नहीं कर. कौन सा क्वेश्चन? एनिमल फार्म वाला? किसी का भी नहीं, क्वेश्चन सेंड किसके पास है? हमारे पास. लेकिन मैम बोलेगा आप देने के लिए. अभी हम चल रहे हैं. उसके पास एनिमल फार्म का नहीं, बाकी पिछले चैप्टर. एक दो चैप्टर का मैंने दिया भी नहीं. ऑफ स्टडीज फॉरगेटिंग, ये सारे, हाँ ये सारे चैप्टर्स का नहीं. जो एक्चुअल आपकी प्रोज हैं, which are the stories that actually have characters and definitions, उसके मैंने आपको भेज दिए, ठीक है? A work of art, a definition of gentleman तक जितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उतने चैप्टर्स तक आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए. उसके बाद से ऑफ स्टडीज एंड फॉरगेटिंग, ये दो चैप्टर्स के नहीं होंगे. इंडियन सिविलाइजेशन का नहीं होगा आपके पास. एनिमल फार्म का नहीं होगा. एनिमल फार्म के क्वेश्चंस मैं भेज दूंगी. बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें से प्रोबेबली आपको सिर्फ मेजरली एक ही क्वेश्चन आएगा, that what is your thought about the studies that has been described by the writer, what is your thought about the forgetting or the event of forgetting people, why people forget about that, या फिर आपका जो इंडियन सिविलाइजेशन, do you think the culture that the Gandhiji wanted pursue can be pursued in this 24th century or not? इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. उसके लिए आपको चैप्टर सिर्फ एक बार रिवाइज करना है. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप चैप्टर रिवाइज करने के बाद आंसर नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? So the definition of gentleman में यहाँ पर देखिए some of the few major points that were defined of how the gentleman, how you can qualify as a gentleman. See, this definition was written again in 16th century. So you need to put it to your mind that this is not the actual definition right now working, or it is nothing that is compared with basically the events that should be happening or the qualities that a person should have for being a gentleman have slightly changed. Not purely, अभी भी बहुत सारे इसमें definition है, adjectives हैं जो अभी के एक पर्सन के लिए जेंटलमैन होने के लिए क्वालिफाई करने चाहिए. लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो अब आप कह सकते हैं बहुत सारी चीजें उतनी रिफाइंड नहीं रही गई है. इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बीइंग फॉलोड. इट इज स्टिल फॉलोड बाय मेनी ऑफ द पीपल, बट स्टिल इट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड because it is sometimes considered to make someone inferior. You are doing that. उसको नेगेटिव वे में बहुत सारे लोग लेने लगते हैं. इसी वजह से कुछ चीजें अभी भी फॉलो नहीं होती हैं. But at that moment of the time, 16th century, 17th century, people used to actually believe about these things, that if you are a gentleman, you need to follow these kind of steps. And if you are following up these kind of steps, then you qualify as a perfect gentleman. Even though all the people who were basically born in the high profile families, they were said to be the gentlemen, but they were not meant to be the gentlemen. इसका मतलब क्या कि जितने भी लोग थे, जितने भी मेल पर्सन थे, वो हाई प्रोफाइल फैमिलीज में जो जिनका स्टेटस सोसाइटी में बहुत ऊंचा था उस समय, उसमें जब वो जन्म लेते तभी से उनके जेंटलमैन बोलना शुरू कर दिया जाता था. Once they become the actual age of getting to be said like a man, at actual age of qualifying as a man, not a child, उस समय से उन्हें जेंटलमैन बोला जाता था. लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है जेंटलमैन का, ये डेफिनेशन अब किसे जेंटलमैन कहना चाहिए, किसे नहीं कहना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ पर देखा. ठीक है? Newman was actually trying to differentiate that not every person who is born in the high society or high status families can be qualified as a gentleman.
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हाई प्रोफाइल फैमिली में जन्म लेने के बावजूद अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते थे. दे यूज टू मेक पीपल फील इंफीरियर, वो दूसरों को नीचा दिखाते थे. दे यूज टू नॉट टॉक टू द सर्वेंट्स और एनीवन हु इज बिलो देयर स्टेटस प्रॉपर्ली. ठीक है, वो अच्छे से बात भी नहीं करते थे. दे यूज टू ट्रीट द पुअर पर्सन पुअरली. दे यूज टू ट्रीट द सर्वेंट्स पुअरली. जो लोग अपने से अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, businessmen were actually not considered to be a proper status. बिजनेसमैन को बहुत ही खराब माना जाता था. They were considered that people who were trying to get money from the actual status people. वो सोचते थे, लोगों का उस टाइम सोच ये होता था कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो दूसरे के पैसों पर प्रॉफिट कमाते हैं. बेसिकली दे डोंट वर्क एनी अकॉर्डिंग टू द हाई प्रोफाइल स्टेटस फैमिलीज. उनका ये थिंकिंग था कि अगर आप एक्चुअल में ऐसी फैमिली बर्थ नहीं लिए हैं जहां पर पैसे पहले से ही हैं, ठीक है, खानदानी आप रईस नहीं है बेसिकली, तो आपका कोई स्टेटस नहीं. नाउ दिस एक्चुअल बिहेवियर वाज हैज गॉन ऑन टू मेनी इयर्स. मतलब ऐसा नहीं कि ये अचानक से डेवलप हुआ था या बहुत बाद में डेवलप हुआ है, ये हमेशा से रहा है. एंड उन जैसे लोगों को ही सीधा करने के लिए, एक तरह से उन्हें बताने के लिए कि जस्ट बीइंग born in a family of status and financially good, it is not compulsory that you qualify as a gentleman. There is an actual act of doing something, actual attributes, actual qualities you need have to be qualified as a gentleman. आपको एक ऐसी set of qualities होनी चाहिए आपके अंदर. कुछ काम आपको करने होते हैं, कुछ वैल्यूज दिखाने होते हैं. ओनली देन यू कैन से दैट यू आर अ जेंटलमैन. अंडरस्टूड? नाउ द फर्स्ट थिंग दैट ही इज ट्राइंग टू से इज द डेफिनेशन ऑफ जेंटल. हाउ एक्चुअली ही केम अप विद द डेफिनेशन. किस तरह वो डेफिनेशन उन्होंने ये फॉर्म की है, ये सारी चीजें बताते हुए कि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह रहा है लोगों के साथ बात करने में. Now, if we go to from his point of view, John Henry Newman was a writer. That's why he was writing. एक writers की बहुत ज़्यादा respect उस दौरान नहीं होती थी, because writing और art basically was considered to be a very poorly financial job status. art को जो follow करते थे उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था प्रोफेशन में, and because of that financial weakness they were not considered to be someone respected. उस फाइनेंशियल वीकनेस के कारण उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे राइटर्स जो हैं, आप अगर 16th या 17th सेंचुरी से पहले या बाद में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे राइटर मिलेंगे जिनके नाम के आगे या नाम के बीच में लॉर्ड लगा रहा है. ठीक है, लॉर्ड टेनिसन, यू माइट हैव ऑन हिज नेम. फर्स्ट ईयर में आपने लॉर्ड टेनिसन. So this was basically a revolt or rebellion by the wealthier people. वो लोग जो एक्चुअल में आर्ट की कदर करते हैं. ठीक है, आपने मतलब they actually there were people who does not want buy painting. ठीक है, उन्हें पेंटिंग खरीदने का कोई शौक नहीं था. लगता था कि वो पेंटिंग जो खरीद रहे हैं पैसा वेस्ट कर. But there were many people who used to actually फाइनेंशियलाइज दोज पेंटर्स हु वर वेरी गुड. ठीक है, जो बहुत अच्छे थे उनको वो पेंटिंग उनकी ऑक्शन किए जाते थे. और जो रईस लोग थे, जो फाइनेंशियली गुड पीपल होते थे, वो एक्चुअली उन पेंटिंग्स को खरीदते भी थे क्योंकि उनको घर में लगाने से उन्हें अच्छा भी लगता था. प्लस दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट द आर्ट ऑफ दोज पीपल. ठीक है, तो राइटर्स को यहाँ पर जो डेफिनेशन he has come up with the definition. Why? Because he has interacted with number of people. उन्होंने अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग स्टेटस के लोगों से बात की, और उन्होंने ये डेफिनेशन निकाला कि किस तरह यहाँ पर इन जैसे लोगों को हम जेंटलमैन कह सकते हैं और इन जैसे लोगों को हमें नहीं कहना चाहिए. Just by birth, someone cannot be qualified as a gentleman. Actually, have to have some adjectives, some attribute inside. ठीक है. Now, the first definition that he gives is how people basically indulge in negativity. ठीक है, नेगेटिव चीजों में या नेगेटिव एक्टिविटीज में किस तरह आप ज्यादा ध्यान देते हैं. बहुत सारे लोगों को, स्पेशली मेन, यूज्ड टू थिंक दैट दे नॉट गॉसिप.
ठीक है, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं गॉसिप करना सिर्फ लड़कियों का काम है, ठीक है। This is not true and this has never been true. All the men they used to only gossip, but the difference is they used to gossip about the people who are investing rather than the fashion and design. That's why they used to think that they used to not gossip. लेकिन गॉसिप तो वो लोग भी कर रहे हैं। गॉसिप क्या हो रही है वहां पर कि उस पर्सन ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसका इन्वेस्टमेंट पक्का देखना तो जाएगा। ये लाइन ऑफ थॉट जो जा रहा है ये तो गॉसिप का ही लाइन ऑफ थॉट है ना, बस आपका सब्जेक्ट अलग है, राइट, वे ऑफ टॉकिंग अलग है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं अलग है, राइट। सो ये जो डेफिनेशन है, जो लोग गॉसिप में इंडल्ज नहीं करते हैं उसी लिए इंक्लूड किया गया है और स्पेसिफाई किया गया है व्हाट एग्जैक्टली गॉसिप इज। ठीक है, आप किसे कंसिडर करते हैं गॉसिप को? ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप फैशन में बात कर रहे हैं या किसी के ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं वो गॉसिप है, या एक्चुअल में आप जिसके भी लाइफ पे या जिसके भी बिजनेस पे कमेंट कर रहे हैं वो गॉसिप होगा इंक्लूड करना। ये डेफिनेशन डिफर कर जाता है, ठीक है। While the men think that they are talking about investment, they are rather not talking about their investment, they are talking about the investment the other people are making, ठीक है। पॉलिटिक्स के बारे में आप बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रख रहे हैं then it is a different, but if you are talking about that person कि वो पॉलिटिक्स जो भी प्लान करना चाह रहा है अपनी पार्लियामेंट में जो भी अपना बिल को पास करवाना चाह रहा है that is for their own benefit और that is nothing to do with the common people's good, तो ये चीज ये डेफिनेशन अलग हो जाती है। that includes in gossips because you are commenting on something that is not your opinion on some topic rather than some person। आप जब किसी पर्सन के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो ये गॉसिप ही कहलाता है, राइट। सो मेजर थिंग द फर्स्ट थिंग दैट ही सेज इज गॉसिपिंग और मेकिंग फन ऑफ पीपल इज समथिंग दैट द जेंटलमैन डू नॉट डू। ठीक है, एक जेंटलमैन को गॉसिप या किसी को मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। तो जेंटलमैन अगर आपको डिफाइन करना है the first thing that is the definition include the person who is not gossiping, who is making people comfortable in the conversation। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो भी व्यक्ति से वो बात करते हैं उन्हें वो कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं रादर देन का मजाक उड़ाने की बजाय या उनको नीचा दिखाने की बजाय उनसे एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की तरह कन्वर्स करना वो चाहते हैं। अंडरस्टूड? तो पढ़ के आएगा, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करेंगे।